are going to start with chapter number 17, Permanence of Good Deeds. तो इसी स्टोरी है, इसको पढ़ेंगे. Growing up in Africa, the son of English settler and orphan accompanied my mother, a doctor, on her rounds. अफ्रीका में बड़े होते हुए एक अंग्रेजी बेशक के रूप में मैं अक्सर अपनी माँ के साथ दौरे पर जाया करता हूँ. We went in her car, which was like a mobile clinic. हम उनकी कार में जाते थे, वो कैसी थी? एक मोबाइल क्लिनिक की तरह ही चमचमाती. It was fitted with a medical chest with a wonderful array of equipment, glinting stars, cotton swabs, dozens of pill bottles, and tubes of ointment. We covered hundreds of kilometers around Masters village in the rural eastern highlands of what was then southern Rhodesia. तो उनकी कार में क्या था? एक फर्स्ट एड बॉक्स की तरह एक फर्स्ट एड बॉक्स हुआ करता था जिसमें वो ये सब सामान रखती थी. उसके बाद वो वहाँ से हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर जाया करते थे अपने गांव से बाहर. जो कि कहाँ था? जो पहले जो कि दक्षिण रूसिया में था. All of life was there and sometimes dead. तो वहाँ पर जो लाइफ थी वो बहुत ही भयानक थी और कभी कभी वहाँ पर मौत भी थी. My mother's single biggest lifesaver was her vaccination program, which was close to her heart. तो इसकी जो मदर जो थी वो क्या करती थी? वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखती थी, यानी वो टीकाकरण किया करती. When notes to inoculate people against smallpox, diphtheria, tuberculosis, and polio became part of our dry season routine. तो वो किस चीज़ों पर टीका लगाती थी? वो इन सभी बीमारियों के लिए लोगों वो इन सब बीमारियों से जूझ रहे होते थे उनका टीकाकरण करती थी, यानी स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो का टीकाकरण किया करती थी. Our journey took us high up towards the glittering granite Chimney mountains. These bordered the most remote, unexplored part of Mozambique, where a guerrilla war against the colonial Portuguese was underway. We had sent word ahead, and when we arrived, thousands of the local Dao people had gathered, most of them from across the border. तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा हजारों वहाँ के जो लोकल लोग थे वो क्या थे? वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार थे. We were not supposed to vaccinate to Mozambicans, but my mother felt it made sense to because the adult crossed the border so freely. तो वो उसकी मदर तो थी वो उनका वैक्सीनेशन नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी मदर ने ये फील किया कि क्यों ना इनको फ्रीली बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए. आई हैड पिक्ड अप पोलियो वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन. मैंने पोलियो वैक्सीन के लिए बच्चों की मदद की थी. आई हैड ए ट्रे ऑफ शुगर लम्प्स एंड कुड give one to each person behind. It became a health assistant with a bottle of vaccine. He would squeeze a drop of the bright pink solution into each lump. तो इसमें एक एक लम्ब में एक पिंक ब्राइट जो थी ड्रॉप होती थी. Then I had gone for turns out and marched down the line, checking that the children had all swallowed. उसके बाद वो जो ऑर्डर थे इसमें वो बच्चों को उनकी टंग पे दो दो बूंद जो थे वो पोलियो ड्रॉप डाल देता. My biggest problem was to prevent them from coming round again to that second sugar lump.
उसके बाद तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो लोग एक के बाद आए जा रहे थे, उनको क्या था, उनको शुगर लंप था। Those were the days of relative peace, but as I came into manhood in the 1970s, the war for black majority rule started in Rhodesia. Our district, with its low water, with Mozambique, was devastated. Nearly every block was attacked. तो उस समय जब वहाँ से वो लोग बॉर्डर तक क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ के आसपास के खान में जो थे वो सब क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। For almost 10 years, humans never ventured into the vast minefield near the mountains at all. और लगभग 10 सालों तक वो सभी थे मानव जो थे वो आपस में पहाड़ी के पीछे, पहाड़ी के पर रहकर ही वहाँ पर क्या नहीं कर रहे थे, एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। एंड नेक्स्ट फोर इंग्लैंड when land चला गया, I tried to forward Africa to dismiss my homeland, now renamed Zimbabwe, as a place with too many ritual, violent memories, a place of death. उसके बाद जब वो इंग्लैंड वापस आ गए तो उन्होंने अफ्रीका को भूलने का बहुत ट्राई किया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपना हर उनकी जो जमीन की भूमि जो थी वो सब छोड़ के आए थे, और वहाँ आकर उन्होंने अपना नया नाम रख लिया था जिम्बाब्वे। और ये एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर वो शान से जी सकते थे। वो उस प्लेस को भूल जाना चाहते थे, अफ्रीका को, जहाँ पर बहुत ही वायलेंट फैमिलीज रही और जहाँ पर वो एक डेथ का प्लेस था उनके लिए, जिसको वो अपने माइंड से एकदम निकाल देता था। I took up readiness and began working for the later Sunday Times. In 1986, the paper assigned me to South Africa, where the black townships were in flames on a daily basis. It was from my base at Johannesburg that I ventured back to Mozambique for the first time since my childhood. And वो फर्स्ट टाइम उनके चाइल्डहुड में उनसे मिले थे, वापस आएंगे। By then, Mozambique had been battered by disease of why I family. It was meant to be the poorest country in the world. सबसे poorest country की world की। The Marxist government was itself struggling against a new generation of rebels. It was widely reported that the Mozambique rebels had bases in neighboring Malawi, though no one had any proof. Malawi normally banned foreign journalists, but taking advantage of a tool by Prince Charles, I slipped in as part of the official press entourage. I soon split off from the group and headed south. For a day and a half, I drove along the Mozambique border, speaking to locals and missionaries. Finally, in the middle of the second day, I stopped at a trading store. Finally, and मैं वो रुके trading store पर. The interior was almost bad after the bright sun outside. तो इंटीरियर जो था वो वापस से ब्राइट सन के बाहर जाने के बाद चमक रहा था। I asked the storekeeper if he ever saw rebels on this side of the border. तो उन्होंने पूछा storekeeper से कि इस साइड क्या तुमने बॉर्डर की इस साइड पर क्या तुमने rebels को देखा है? My eyes got used to the darkness just in time to see his white smile disappear. From the furthest corner, I heard metallic chinking. Who wants to know? Asked a deep voice. वो अपने deep voice में पूछते हैं कि तो किसको जानना चाहते हो?
In the corner were 6 men seated in banderoles of ammunition with dull brown generates dancing from their webbing. वो कह रहे थे कि कॉर्नर में थे 6 लोग हैं जो बहुत ही अलग दिखाई देने वाले हैं. Russian Kalashnikov rifles were propped against the wall. A rocket launcher was laid across a concrete table as the men drank soda. "You coming with us?" said one of the men back to our base. And with that they all got up and leave their advanced training. We trucked south home, slugged the patrols, English speaker village of, and I was left with 5 heavily armed brothers and no way to communicate. They were led by a thuggish servant. Despite the intense heat, wore out fleet-lined Russian aviators had with furry relax that danced to his shoulders like spinner ears. At every ribbon encampment we passed, I sensed the story of my capture being imbalanced. I had been, I had resisted, I was inspired. Sometimes the story was accompanied by puff and kicks. I started to worry the red-eyed sergeant might shoot me to impress his comrades. On the second day, we finally reached their small van in on a fatigue. उसके बाद नेक्स्ट से वो फाइनली कहाँ पर पहुंचे? एक छोटे आदमी के पास दो बाहर थे, वो एक ऑन फिटिंग्स में थे. As he listened the long report of my capture, और उन्होंने एक बड़ी लंबी रिपोर्ट को कैप्चर की थी. वे his dinner arrived. अब वो अपने डिनर के लिए पहुंच गए. I was ordered to wait. मैं उनके ऑर्डर का वेट कर रहा था. Until now, I had not understood the languages. They were speaking a mixture of northern Mozambican and Malawi dialects. It was certain with phrases of Portuguese. वो उनकी लैंग्वेज जो थी उसको समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो एक मिक्सचर लैंग्वेज यूज कर रहे थे. नॉर्थर्न मोज़ाम्बिक एंड मलावी दो लैंग्वेज की मिक्सचर्स को वो यूज कर रहे थे. बट नाउ आई डिस्टिंक्टली हियर द कमांडर give orders to his servant in Chalmano, a dialect used by the Narao people. I listened a little longer to be sure, and attentively read the commander in what I could remember of Chalmano. He was amazed. What amazed हो गया? Where did you learn this language? He asked. मैं पूछा कि क्या तुमने ये लैंग्वेज जो है वो नहीं सीखी? I told him I had lived in Chalmano mountains on the northeast side as a boy. What is your family name? He asked. Godwin. उसकी फैमिली का नाम पूछा तो क्या थी? Godwin थी. Godwin, he said thoughtfully, turning over the name. Was your mother the doctor on that side? Yes, I said she was the government medical officer for the Manchester district. मुझे पता है कि उसकी जो मदर जो थी वो एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर थी. किसके लिए? मैनचेस्टर डिस्ट्रिक्ट के लिए. He smiled and shook his hand and put out his hand for an optical handshake. She was the one who vaccinated me when I was a child. तो उससे वो जो थी उसकी जो मदर जो थी उन्होंने उसे वैक्सीनेट किया था जब वो चाइल्ड से एक बच्चे थे. Pulling up his sleeve, he showed me a small vaccination scare on his shoulder. वो जब वो छोटे थे तो उन्होंने क्या किया? उसकी स्लीव हटाकर उनके शोल्डर्स पर जो था वो वैक्सीनेशन किया था.
Did you ever go with your mother to help her? He asked. इसके बाद वो क्वेश्चन है कि क्या तुम चाहते हो अपनी मदर की आगे से मदद करना? I nodded. Yes, he said. You gave me the sugar medicine. I remember now. We put out our tongues and you came down the road with a tray of nuts and one egg each tongue. वो कहता है हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर अपनी मदद की मदद करना चाहता हूँ और मैंने शुगर मेडिसिन भी दी है। मुझे याद है भी कि जब मैं वहाँ पर उनके पास जो लोग आते थे उनको उनकी टंग पर शुगर ड्रॉप डालता था, शुगर की मेडिसिन जो थी वो डालता था, देता था। Look now, he said, I grew up strong. In a few minutes, I had been elevated from hostess to honored guest. I was ushered to sit at the commander's right hand. My capturing sergeant had melted away. जैसे ही वो कमांडर से उन्होंने राइट हैंड मिलाया था और उन्होंने इनकी जो कैप्चरिंग थी वो उससे वो काफ़ी मैच हो गए थे। द फॉलोइंग डे के बाद का जो दिन था आई वॉज रिटर्न टू मालाबी। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट डे था उसमें वो कहाँ पहुँच गए? मालाबी पहुँच गए थे। एट द बॉर्डर माई एस्कॉर्ट handed that the items they had confiscated before they left. They stood on a formal group photograph, 4 rebels and me, the sergeant still wearing his furry flying hat, his arm resting on my shoulder in an act of possessive camaraderie. I heard the photo still a testament to the permanence of good deeds. तो ये जो टेस्टामेंट जो था वो एक परमानेंस गुड डीड्स थी, एक बहुत अच्छी आदत थी। तो यहाँ पर क्या था कि जो ऑथर थे उनकी जो मदर थी वो वैक्सीनेशन एक मेडिकल ऑफिसर थी जो वैक्सीनेशन किया करती थी और ऑथर जो थे उनकी मदद करती थी। तो दिस चैप्टर है सीरीज, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।